Jai Mataji everyone. So today we have our final concluding session. So welcome everyone who are online and in person. We have simple three topic today. One is our discussion and guidance from our seniors and all members who are here and online about where do you see Rana for next 5 years or at least for next 2 term of like 2 year of NEC terms. And it's an open discussion, everyone can interact. Then we have our convention treasurer Ardavsi Mehta Bapu. He will say about the financial situation about convention in and out and what we need. That's the main part. And third one, vote of thanks. So I request Sonal Ba to come forward and handle this QA session. Where do you see Rana for next 5 years? We start from our senior. Let them speak a minute or two, whatever they want to say, and then open for everyone. We have one mic, so what I will do, let me come personally, myself or Sonal Ba, and then. Okay, Gajendra Singh Babu, please come on stage. For the award, we missed for the performances. So please come and let's give this award. This one's for Ayush Kumar Singh. On behalf of somebody. So yeah, if someone can pick up behalf of from the chapter, or you can just give it to them. Yeah. And he did a wonderful performance actually. Yeah. It's my pleasure to. The next one is Kavya Singh. Anyone from NJ chapter? I guess Monaba. Are you from NJ, right? Or no? Oh, there you go. Yeah, sure. Yeah. Varsaba, one more for Taran Singh Jaron. You can still stay here. Or maybe Maharshi Bapu can come for Devangini. For your daughter. Yeah. This one's for your daughter. Yeah. Next one is for Sup Jadon. I guess he's again NG chapter. Yep. It's Subhangini Jadon. We'll keep it. One more. ये वाली पिक्चर जरूर लेना. Yeah. This one's for Canada and it's for Slok Parmar and Dhyan Parmar. I request Jignesh Bhai to come and pick up behalf of Canada. Yes. And make sure आप उनके तक आप ही पहुंचाना. तुम्हें आप. Thank you. Yeah. Thank you, Gajendra Singh. Yeah, so it's open questions for Rana. Who want to go first? Girish Babu, please.
Jai Shri Ram. I think the convention committee under leadership of Naresh Chawla, and he also, our chairman K.N. Singh, who is the chief officer, they had done fantastic job in this situation where people, 90% think that we cannot do the convention. It is the decisions of NEC, Gajendra Singh and Naresh Chawla and their team has worked tirelessly to make it happen. And it happened. The new milestone came into this time. The virtual, well, all world people joined that. And I don't think that when I'm going to say next is somebody like my friend, whatever I say, my most favorite guy say, but I have to say because otherwise I'm guilty. The senior advisors also to guide them, even though people has criticized a lot to them, but they have created interest for Rana and they work all years with no reward for Rana. So one of the best performance in these conventions, who is outsider, who have help from senior group, I like to raise everybody. His name is Mahavir Singh Chudasama. Thank you, Mahavir Singh. Thank you so much. On behalf of NEC and his election committee, I thanks from bottom of my heart. Also, I thank Varsava to stand behind and help to give a lot of time for him. And I know we talking day and night, about 11, 12, 1 o'clock sometimes, so he is also work more than me. So I like to give all the credits to Mahavir Singh. Sunil Singh is there with, our duty to help. So myself, Sunil Singh, Veeresh Singh, and we continue to give whatever I can do, or other my colleagues has to do. So I think, but the people should think positive. It's very easy to sit in a quarterback chair and criticize. I know constructive criticism is welcome, but there are so many unnecessary time-wasting people are doing. Instead of that, they use their time to help Rana wherever they can. Financially, by guidance, by working with the committees who are there. I think that will bring Rana much better, higher level. That's what I think. I pray God that will happen. Incoming who is coming, our president is our president, and the team is our team, and we should fully support them after they sworn in. Because otherwise, to just criticize is very easy thing to do. Now, so one thing I request at this age, to all my Rana members, which I love you dearly, to please be positive, and whatever team's coming by major elections is our team, he or she is our president, and we all wholeheartedly support that. That is my request. I think but this time I must thank, I think that Gajendra Singh and Naresh, they had done virtual new step in the leadership of K.N. Singh and their staff and their committee is wonderful. New step for Rana, never did before, and a lot of overseas people participate, and you give new idea that by the connectivity, technology connectivity, we are at one house, we are joined together, we sat together. So that's the best thing happened. This is the best convention. I hope all the best to all attendants and who are virtually see this. God bless them. Jai Shri Ram.
Thank you, Dhiraj Babu. Now, Mahavir Ji, you want to add some? Thank you. First of all, thank you Convention Committee for doing the wonderful job in doing this convention in COVID-19 time. It was a Herculean task to pull it off in a short notice once they have decided. But I have seen Naresh Bhai, KN Singh Ji, Raju Bhai, Gajendra Singh, हमारे चौहान भाई, प्रकाश भाई भी ज्वाइन हुए, काफ़ी लोग यहाँ पर है. They joined in short notice and made this beautiful, memorable convention. So a round of applause for them. Thank you. Sonal Ba, of course. and a couple of people, Meenakshi Ji, Rajiv Singh, Rittiba, everybody joined in the cultural. So thank you all. Other thing I would like to recognize is Bapu's age and his willingness to come in spite of COVID, fear. He said, no, I want to join even though my kids advised me not. So Bapu, thank you for coming. Apan Bhanuba, thank you for guiding us, during this thing. So thank you all. But other than that, I wish everyone a good health after this convention. Hopefully everyone will be okay. And make a pledge today that in spite of all this, I would say WhatsApp chatter, let's make our community stronger. Let's guide our youth, our kids, and the next generation to be a stronger association and make them help each other. I think that should be the only goal of people like me, our age. Okay, we need to guide our kids better in our culture. So let's make that pledge. And thank you all. Thank you, Mahavir Ji Babu. Bijendra Ji, you would like to add? We will go with Bijendra Ji and then Prakash Chauhan and rest of the people. थैंक यू. जय माता जी एवरीवन. तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है जितना भी बहुत बढ़िया है. और मैं कन्वेंशन कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब KN सिंह जी, प्रेसिडेंट साहब गजेंद्र जी और जो है कमेटी के जितने भी हैं, राज बापू, सुरेंद्र भाई साहब, प्रदीप जी और जो है सोनल बाजी भी आई हैं, अपने जो है कन्वेनर नरेश सिंह जी और जितने भी हैं सारे जानते हैं एक दूसरे को. तो सब मिलजुल के काम करें और अपने चैप्टर के अंदर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों. और जैसे कनाडा से अभी इलेक्शन था तो इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिला, मैंने भी थोड़ा किया है. तो वहाँ से कुछ खबरें आई कि इनएक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा. तो हम लोग उसकी तरफ भी ध्यान दें. कनाडा में भी कम से कम 100-200 मेंबर बनाने की कोशिश करें. वहाँ पे गुजरात के बहुत सारे लोग हैं और दूसरे भी अब बहुत आ रहे हैं. तो हमको ये बढ़ाना है राना को. और मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई पॉजिटिविटी में और ज़्यादा लोगों को जोड़ें, हम ब्रिज बने नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स के बीच में. और जो है दूसरा चैप्टर में अब हमारी जो सिल्वर जुबली होने जा रही है, नवनीत भाई साहब ने जैसे बताया, आप लोगों को शायद अभी इन्विटेशन भी देंगे. तो उसमें भी चैप्टर में भी हम करें. देखो अभी बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर हैं सब लोगों के पास, बहुत सारे लोग हैं. तो थोड़ा थोड़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं हमेशा कैसे लेता हूँ, मतलब इंडिया में यहाँ पे हर जगह करता हूँ. आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं ऐसे लेता हूँ फाइनेंस को कि आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा, राइट, वो कल को माइनस में चला जाता है. और डेली होता है ये लगभग कि वो जो पैसा है कई बार 10,000 डाउन जाता है, कई बार 10,000 अप आता है. तो कई बार ऑप्शन खरीदता हूँ तो अभी मेरा लास्ट वीक में 6,000 का ऑप्शन गया लॉस में, राइट. अगर मान लो मैंने राना को $3,000 दे दिया या अपनी कम्युनिटी को बैक होम किसी को दे दिया, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 6,000 तो वहीं चला गया, 3,000 इधर चला. बिजनेस में अब जैसे मान लो कि किसी ने किराया नहीं दिया, मेरा जो है रेंटल का किराया, या जैसे उसको लेट फी मैं ज़्यादातर नहीं लेता, वेव कर देता हूँ. और मान लो 1 साल के अंदर कम से कम $3,000 लेट फी का बनता है, वो वेव कर देता हूँ उनको. तो ऐसे ही मैं अपनी कम्युनिटी को भी दे सकता हूँ, राइट. अभी जो है हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, हमारे चैप्टर में भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई रिकॉर्ड तोड़ हम काम करें. अभी ये जितना बोलेंगे
उनको मैं हमेशा बोल ज़्यादा नहीं तो कम से कम $1 तो भाई सबसे ज़्यादा लगा दे। ये घमंड नहीं है, ये मेरी मतलब इच्छा है, मेरी हॉबी है कि रिकॉर्ड तोड़ो, राइट। तो अभी पिछली कन्वेंशन में रिकॉर्ड तोड़ा, अभी भगवान ने चाहे तो अगली कन्वेंशन में भी आप लोग आए, रिकॉर्ड तोड़े। अच्छे कामों में हम रिकॉर्ड तोड़ें, यू नो। क्रिटिसाइज करना हर वक्त, हमारी कम्युनिटी को बदनाम करना, उसके बारे में गलत लिखना, लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, यू नो, ये गलत है। क्योंकि ये आदत हमको भी फैमिली में पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी वही करते हैं जो हम यहाँ, ये हमारी नेचर बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगली कन्वेंशन में भगवान ने चाहा, अगर आप लोगों में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा तो आई एम द पर्सन जो गोइंग टू रिकॉर्ड ब्रेक माई ओन रिकॉर्ड, यू नो। तो जबकि ये नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, किराए के घर में रहता हूँ, आज भी मैं किराए घर में रहता हूँ। मैं कोई बड़ा, कल परसों में आप लोगों को बता भी रहा था, मेरी लाइफ यहाँ पे हमेशा मेरे को आज मेरा सब कुछ ले लो आप, मुझे अफ्रीका में छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, 3-4 साल के अंदर मैं वापस जो स्टेज पे आज हूँ 5-7 मिलियन कैश आपको बना के दे सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरी नॉलेज है, और ये सब इसलिए आशीर्वाद, पुण्य कर्म करते रहना, पॉजिटिव में रहना, और जो है अच्छे लोगों की संगति है, सब आता है। तो इसलिए जुड़े रहें, सारे लोग जुड़े रहें यहाँ पे। अब जैसे इतनी दूर से ड्राइव करके आए हैं हमारे प्रताप सिंह जी, मोना जी, कितने मतलब इतने लोगों से जब हम मिलते हैं पता चलता है कितने ग्रेट लोग हैं ये लोग। इनका बोलने का तरीका देखो कितना, मैं इनसे सीखता रहता हूँ हर वक्त, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। मोना बस इतने बढ़िया बोलते हैं, यू नो, आप इनसे बात करके देखो। धीरज बापू हैं, आप इनका हाथ पकड़ के देखो, यू नो, हाथ पकड़ो ऐसे यूं सुबह सुबह उठ के, आपको शांति मिलेगी, है ना। मतलब देखो वो उधर हमारे राणा बापू नए जो है अभी, यू नो, वैसे तो बहुत पुराने लेकिन अभी बहुत ज़्यादा और ये सीरियस स्पिरिचुअल में बढ़ते जा रहे हैं। इनका हाथ पकड़ो सुबह आके, यू नो, आपको मतलब ठंडक महसूस होगी अंदर। तो क्या चीज़? नहीं, चरण भी पकड़ो, बट कम से कम, क्योंकि अभी तो भाई है ना यहाँ पर, तो बट यू नो जब वो चोला पहन लेंगे वो वाला तो चरण भी पकड़ेंगे। तो ये मतलब हमको ये सोचना चाहिए, ये हमारे संस्कार हैं जो हमने अपने, जब जॉइंट फैमिली होती थी हम सबके चरण करते थे, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, राम राम करना, यू नो, वो सब चीज़ें थी, तो वो चीज़ हमको राना मिलती है। तो यहाँ पर अब देखो, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब सोचता हूँ, जब अकेला होता हूँ, भगवान ने मुझे कितना अच्छा मतलब सौभाग्य दिया है। यहाँ गुजरात के हमारे भाई बहन, कभी मैं सपने में नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ के मिलूँगा इनसे, यू नो, कभी नहीं। अरे सोचो कुछ, मतलब ये इतनी बड़ी सौगात है आपको। अब कोविड के अंदर हम सब लोग, यू नो, सर्वाइव किए हैं, यू नो, भगवान को धन्यवाद करो सब लोग, और जो मिलजुल के रहो सब लोग, जो है हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा, यू नो। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई थोड़ा बहुत लॉस है कन्वेंट, बिकॉज ऑफ अटेंडेंस इतने नहीं आए, और कोविड, और खर्चा बहुत ज़्यादा है, और ड्यू टू ये अपना जो नेटवर्किंग है इन सब चीज़ों। तो थोड़ा मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ कि जितना 100, 200, 500, 1000 जो भी जितनी मदद कर सकता है थोड़ा और कर दो, मतलब दूसरे लोगों से भी कराओ। आप लोगों ने सब ने बहुत अच्छा किया, काफ़ी लोग बहुत खर्चा किया। विजय जी हैं, और जो है अपने नवनीत भाई हैं, केन सिंह, जब ये मतलब एक टिकट जो है $600 और मोर पड़ी है, यू नो। तो विजय जी जैसे मान लो आए यहाँ पे, तो उनका समझो कि $2500 या $3000 खाली टिकट का होगा, तो इसलिए हमारे कुछ फैमिलीज नहीं आ पाई। तो लोगों ने काफ़ी किया, बट फिर थोड़ा सा और निकाल दो, थोड़ा थोड़ा, यू नो, थोड़ा और करके, तो ये जो है लॉस पूरा हो जाएगा, ख़त्म। और ये तो यहाँ अपना होटल था, इस वजह से कम खर्चा हुआ हमारा, बहुत बढ़िया है, राइट। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे और जोश से हम मिलेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे। कनाडा का और खूब बढ़िया काम करना है, टेक्सास में, न्यू जर्सी में, एवरीवेयर। ओके, थैंक यू, जय माता दी। Thank you. So I will go to Prakash ji, then Surendra Chauhan Bapu and everyone. Namaskar. Good. This is fine or no? Always reminding, he is a member of the top. भाई देखो, कोई बोल रहा है जूनियर मुरारी बापू. After listening to everybody, most of our seniors like Diru Kaka and everybody else, Mahavir also said something.
Vijendra Bhai said something. There's not much to say. What I was listening and thinking as I heard about our future generation from Mahavir Singh, that what we need to concentrate at this age is our younger and future generation, that those are coming or came in last 4-5 years for study mainly. Lot of young dikra dikri, so we call, they are already here. Their parents are reaching out to many of us to take care of them in a way that they have finished their studies or whatever, and they are looking for proper match so that they can settle down somehow. So I would request all our senior so-called and active members to focus on this particular point, that we contact their parents as soon as we get some information and assure them that we have a big family here for them, all our boys and girls, and we will take care of them. That kind of assurance personally we should give them. So at least they feel that we are here. So that is very important for another 5 years, 10 years to come. This trend will continue, that new and younger generation is going to come, and eventually they will become Rana member for sure. So that is very important for all of us to concentrate. Another thing, as I heard from recent talk, that some negativities we see. Now that is part of our human nature. Nobody can avoid that at our home or family or community or anywhere. This is natural. We must overcome this as well as respect this different nature of our fellow brothers. Maybe you can choose to maneuver however you want to, but you cannot just avoid. If you suppress one, there will be another 10 coming up. So we must learn to deal with our fellow brothers, that how we can accommodate their nature, the way of behavior, reacting. This all comes as a part of package. We are not a small family anymore. And they need their room or their space to express themselves in whatever way they feel right. It can be wrong for us, but how to tolerate patiently and laugh it out, what I say. We always joke around and don't take it seriously. It is just a matter of time that either you will be better or change, or they will be better or change in time. So we must not create a group in a way to attack another group or something like that. We must individually handle and respect their, as you all know that I am in EC and I get a lot of mails from a lot of candidates and all those things, and talk to them also. But I try to avoid reacting to their demands and their requests, however you want to put it. So this applies to everybody. With our experience, I can say that I was not like this before. Now I am also learning, and this is like our mother. Our Rana is always forgives you, no matter what you do. No matter what you do. Rana is there to forgive you. Please respect Rana. This is all for you. And this is how we should see. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you, Babu. Let's go to the Surendraji Chavan. He requested. Yeah. So while we are thanking each other here, the question is how we take, or what should we do in next 5 years to take Rana stronger and united. So if anybody has any ideas, have 1 minute or two. Jai Mata Ji, good morning everybody.
So I think I'll talk straight. I do not have anything to fluffing or anything like that. So I joined Rana NEC about 5 years. So Rana has grown by about like 60 or 70%. When I joined NEC, I think with Prakash Singh ji and his team, at that time we had about like around 600 members. Now we have about 979 members in Rana. So it has grown exponentially. And with the time, we also need to change. Because if I look at the constitution, Rana Constitution was written for a very small organization and probably just to meet like smaller requirements. So we also need to change and mature as the time goes on and organization is growing. So we need to, first of all, we need to avoid division in our community. Like elections are not meant for any fraternity organization. If you do that, then will be division. We need to adopt processes like proven methodologies and procedures which are like more mature organizations such as AHOA and then API. There is no elections. Leaders are selected based on the person's performance, his experience, his dedication, his contribution to the community, his influence outside world. And based on that, they have nomination committee, and they based on their denominator who gets the highest point, and based on that, this person is nominated. And that way they avoid division within the organization itself. So that is one thing. And other things, we have like many new members have joined. Whenever they see like WhatsApp chat, those people are like new members are added to number of WhatsApp groups. And when they see kind of negativity, like these are not many people. These people do not think about what the new members might be thinking. They get really bad messages. And many people, like I have heard many people, I know them, they say, what is this going on? I didn't join for this thing. They expect that once they join the organization, they are getting some kind of cooperation, support, some opportunities for growth and development. And also they will learn about like one lady, Ekta Chauhan, she's in Florida. She said she wanted to, she has 2 kids. And she wanted to know if Rana is providing some kind of they are telling about Rajput culture, values, our traditions. So everything is missing. We don't have anything like that. As part of events, we do only 3 events, family convention, youth convention. And then I started the business conference in 2016. So that has been helping. And then we did pilgrimage for our seniors. So what I'm thinking, in Rana, I've talked to many people. Probably I might have talked to about 500 members personally, most of the senior. They all just complain, but they do not come forward. So we have to create an environment in our organization so that they get involved and they can start contributing. So everybody sitting there, but we need to reach out to them and say, you get involved. So we need to have start many activities in Rana so that we can involve more and more people. And once we start doing that, everybody get involved and negativity can be eliminated. Similarly, if we basically, what I'm thinking is going forward for the next 5 years, it's a long time. But we need to add more and more members benefit-oriented programs. So in Rana, I think in the name of members benefit-oriented programs, we have only a couple of events. We distribute scholarships to our students in India. And in addition to that, I don't see anything except the business conference that we created for helping the people to start the businesses and promote the business. If anybody needs, anybody can come forward to us. And then we can provide them help. I think there was one page on our website. I don't find that page where we have different panels for the hotels, IT, consulting, tech startups, and all that. That is missing. So we need to, Gajan Babu, again, we need to establish that page so people can reach. They can go there. If anybody needs help, we can help them out. And then similarly, we have to have some on continuous basis. Like Surendra Chauhan, he has the ideas. We should have some kind of panels such as career counseling, college counseling, tech startups. And we have many talented people. They can all help to everybody. And we must adopt processes or programs conducted by other groups such as Jews. They are doing a wonderful job for their own community. Same thing with Patel. They are also very helpful to each other. And in Rana, we don't see all these things. That part is missing. So my thing is everybody let's not think about any position or anything. I am running only for president position, only to make Rana better. I want to have established some kind of infrastructure within the Rana so that these things are established and then other people can get benefited going forward in the future. So I think those are my ideas in a nutshell. And if you have anybody else, probably can share your ideas. Thank you. Thank you, Pradeep ji. I always as a convention committee,
I think like whenever any candidate, election candidate come, we scare like they don't say like, okay, please vote for me after that. About all the candidate I'm talking, including me. Yeah, Ridhiba is there. Aja. So one thing I just want to point out is the future of Rana is in the youth. And I agree with Prakash saying that we have a lot of youth students coming here, and definitely we should support them. But what are we doing for the youth that is here? And I'm telling you, we will not attract the youth. We have to involve some youth in NEC for them to bring the youth back. And there are people here who remember the convention that was done in Florida, that was totally run by youth. I took the back seat. It was the youth, and I'm not bragging about myself, but youth was present, and that is the youth I want to see in Rana. The youth that is living, born, raised here. And I just heard from somebody outside that we are here because we have family. Yeah, that's why we are here. But there's nothing for us. And I'm not going to name the person, but that is what, 5 years from now, not even within a year, I want some youth to step up and bring the youth back. We adults will not be able to bring the youth back. It has to be the youth to bring the youth back. Okay, and that's all. How you will inspire youth to come and join somebody like you. I'll tell you who to call. You should, because you will attract, and I'm telling you, I've talked to you, you will attract the youth. I cannot attract the youth. Yes, I can influence them, but there should be some attraction. And youth, today's generation is very creative. Okay, very creative. And you cannot even imagine what kind of convention, if they are involved, what kind of convention they can do. And you should take step up. Step up and do that. And I will help you. I'm seriously I will support you because I know a lot of youth. Now they are married. They are at a certain, and I'm talking about youth 25 to 35. That's the people that we want in Rana, and we should all sit back and enjoy that. And everybody has kids, including me. I have a son who's 28. He can be very active. He has a daughter, okay? He has 2 daughters. A lot of people have great youth. They can do excellent job. We should all sit back and enjoy that and let them come up. Because that is not only going to help them, it is going to also help their kids learn our culture. And thank you. What happened, Babu? You want to speak? Yeah, go get Babu. What do you want to say? No, right now what I'm saying is when somebody is talking, please do not talk inside. That's all I'm requesting. Oh, yeah. Do not. Yeah. If you want to walk outside and talk. Yeah, you're right. Sorry. No, I took the mic again because I feel I should want to say my bottom of heart feelings. I think the youth is the Rana, and youth, we have to trust them. And as Ridhiba said, they should come into NEC, not 1, not 2, 3. One of the time I and JB Singh want to give chairman's the presidency to youth. That was about Prakash said that. I said I want to make youth be the president. So because see, we have the thoughts, but my thoughts are old. I vision differently than my son, my grandson do. And I just in support, I say, they used to come to convention, Mahavish's kids come to convention,
they're not coming because they think it is just talk and nothing. Let it run by them. Unless and not give the ownership to the youth, Rana will not go further. So please step up back, as Ziba said, and create a formula, and that youth should be born and raised here. Unless a born and raised here, coordinate with this like Abhishek, thing like that, who is back guiding them, that type of thing we should guide. But like let's make the presidents, one of them from them, and see what happens. They do much better than I did and you did. I guarantee that. So please, let's devise the formula where youth really think this is mine, I have to do this, and then they create a beautiful, beautiful, beautiful flower. Then the Rana will, beyond imagination, it will reach. So please brainstorm ourselves how we can hand over the youth, how we can bring youth, something like that. No, that don't interfere. When they say, that's it, you say, yeah, okay. Let them learn by mistake. We learn by mistake in our life. Thank you. Thank you, Dilip Bapu, for wonderful word. We have go to the Rajiv Naresh ji from Texas. Thank you, Naresh ji. Very good points made by the earlier speakers. I generally speak very fast, but I'll go a little slow this time. So obviously the question is, how do you see Rana in the next 5 years, or what you can do to make Rana in a much stronger position after 5 years, in 5 years, right? So I have a question for the audience, like what does Rajput mean to you? If you can just take a minute, what is the definition of Rajput in the current context? It has to be practical, then which it can be applied. Just think about it, because my biggest challenge is we talk about youth, we talk about our children. My children always come to conventions, I bring them along. But given a chance, an option, once they have grown towards and become gone in the 20s, if I give them the option, they say, okay, I won't come. Last time they came, it was a lot of drinking and partying and all that. So my question is, how do you create the value proposition for the youth? Just by saying Rajput means you're son of a king is not enough motivation. What is the meaning of Rajput in this current world? What are the Rajput values? So we should spend some time redefining what is a Rajput. Rajput is not because you are born a Rajput. It is to some extent, but Rajput is what you can become. How can you inculcate Rajput values? Whether it's honesty, whether it's respect, whether it's leadership. So we have to redefine the meaning of Rajput, and then we should propagate to the youth so they understand, okay, this is Rajput. If I ask my son, what is a Rajput? He knows Rana, he may not even know Rajput that well. But he knows Rana. When I said Rana means, and if I ask some of them what is the full form of Rana, he might say, but Rajput, if I ask him, do you know what is the Rajput? Can your kids confidently answer the question, what is the Rajput? Who is the Rajput? So Rajput has to be, in today's context, Rajput has to be, in my opinion, has to be by karma, not just by birth. So let's redefine that's why I quizzed you all, that think what is a Rajput, and we should redefine Rajput in the current context, in the context of a youth, so that they absorb that, and then they'll be motivated to do stuff for us, right? That was my main point I wanted to say. So let's think very hard, regardless of whoever is the president. Today the NEC box in isolation, I believe, some of the NECs I've seen, and I'm not criticizing, even in the chapter committees I see, there are few people who work very hard, there are few people who are least interested, they come on the panel and they sit in the committee, they don't even attend meetings. They're occupying seats, I don't know why, for what ego, for what brotherhood, and probably NEC takes advice from a few seniors, which is all valuable. But NEC should form many kind of committees, right? Regardless of whoever is the president, right? They should form many committees, and actually this discussion should not end here. The committee should be formed and they should analyze everything in great detail and actually have work groups and at least redefine this whole thing, give a new direction to the organization if you want this to grow. Because in 5 years from now, I would like to see all youth all around. My son's telling that let's go to Rana. My
people bond here, not just people who immigrate, they know it. They come here, they want some value out of it. If short term, they may or may not, some of them stick, some of them may not stick, right? But people who are our next generation, if we are sticking with Rana and if they understand the value, they'll always stick all over, meaning till they're here and their kids and their kids and their kids. So we have to create that propagation, the hierarchy by telling youth, this is what a Rajput, and then my son can say, I am a Rajput. And I am a Rajput, he's a Rajput. So let's redefine this thing. I had a lot of things to say, but I won't take too much time. But please ask this question to yourself. What is Rajput in today's world? And how can we make this concept get absorbed by our children or youth so that they can come forward and they can manage Rana in years to come? Thank you. Thank you. He's a very wonderful word. Like his main concern yesterday, today, and maybe in AGM is like to connect the NEC and the chapter body. That's a very important part. We need to come forward. So, Chavan Sahab and then you. Yeah, and then Avansi. Yeah. So we have 10 minutes. So I respect all our speaker and we want to say something, but we have 10 minutes. Then we have a financial report and vote of thanks. So, Avansi ji, aap ajiye. No, while they're doing that, I need a two people who can give the ride. Usaji needs the ride today. Then Esper. Okay. If anybody going that side, I really appreciate it. Yeah, please. Jai Shri Ram, Jai Hanuman Ji, and Jai Guru Rana. Nothing more to add with so many great speakers. Dheeraj Singh Babu, Mahavir Singh Ji, everyone has thanked the convention and the committee and everyone. What should be our vision for next 5 years? That's the main agenda. How we can bring everyone together, how we can involve, how we can bring positivity in our community, how we can unite and work on towards one goal. Has to be a collective effort. It's not like, I give this responsibility to K.N. Singh Ji and let him work on it. If everyone here thinks that what I can bring in, what I can do for Rana, and the efforts combined, that will make Rana great again. To bring youth, the values starts from home. We have to educate our kids. We have to give them the value of Rana, why they should join, what is in for them. The culture has the tradition of our own, has to be, passed on for them to be, and how, those cultures, the values has to be started from our own home. We have to engage our kids in our activities, our Hindu culture, that will bring them, that will bring inside them to want to join Rana, want to do something for our culture, want to see where their kids and will go on. So that it becomes everyone's responsibility. It's not my responsibility. I cannot change Rana myself. It has to be a collective effort. Abhishek will not be able to change Rana, Mahavir Singh, because whatever we are doing here, जितना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को नहीं कर पाएंगे, if we don't encourage them to come up, and as Bapuji said, we should be a force behind them, we should be able to guide them, we should be able to give them a vision, and give, let them take on, let them unite, let them mingle towards each other. We used to have these matrimonial, things among our Rajput families before. And in one of the Orlando convention, on Saturday, we had one program when, our old kids, had together in Florida. It was such a great hit. They meet each other. And there's one more misconception that we have in our Rana community is about we all are brothers and sisters because we call everyone brother and sister. The kids grow up thinking that we are all brother and sisters, so they don't want to hang out with each other.
वो सोचते हैं, उनको तो थिंकिंग दे आर ग्रोइंग अप, ओ ये तो मेरे भाई बहन है. सो यू नो that thinking in their mind वो जाती नहीं है. एंड देन यू नो व्हाट वी वांट टू ब्रिंग आवर किड्स टुगेदर कि भी शादी करेंगे, इनके साथ मिलेंगे. एंड दे उनके यहाँ के बच्चे वेरी स्ट्रेट है, दे थिंक स्ट्रेट. वी टेल देम ये भाई बहन है तो फॉर देम इज अ ब्रदर एंड सिस्टर, सो दे नो रिलेशन. दे गो आउट हियर एंड दे आर लुकिंग फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स. सो थोड़ा उनको एजुकेट करना पड़ेगा, यू नो कि भाई यू नो कौन भाई बहन है, यू नो सर्टन रिलेशन पे कौन है जिनके साथ वो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. सो द इंटरकनेक्शन बिटवीन आवर यूथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, from everyone's home. It is everyone in Rana has a responsibility, and we can all work together and we can bring the youth together. We have to make certain committees for certain everyone run in next committee, whoever comes in means they should have committee as nominated by committee and subcommittees. In charge of 1% or 5% cannot do everything. There should be, assigned communities that, committees that can, focus towards that part, focus towards, convention part, focus towards business part, focus towards kids parts, youth committee, youth president. All those things we have to work together, and that's all. I won't take much time. Everyone is great speaker. Thank you so much for coming and joining this convention. And the committee did excellent job. Kian Singh ji, Naresh bhai, Gajendra bhai, Chauhan sahab, Pradeep ji, great hotel. We wish you all the best. This is our first, so for anyone who is part of this hotel, we wish them best, because ये Rana का hotel means this is Rana का blood लगा है इसमें. So we wish them very very well for this, and thank you so much. Thank you, Avan Singh ji, and best of luck to you also and your team. We have a couple of things, but one of the master blaster is going, so let him speak for 1 minute about the convention. I request Deepak ji, he can say. He worked tirelessly part of technology and IT side about part of convention. He's leaving now, so we give him one time. Thank you, everyone. It was a blessing meeting you all. So, as some of you would know, I'm leaving US in like 20 days. So, this relationship I'll cherish forever. So, India. Keep in touch. That's what it is. Sure. So, so I met you all. It was fun 2 days. I learned a lot and met you all. I mean, that's simply a blessing. Thank you. Thank you so much. Thank you, Deepak ji. Gajendra C. Babu. Jai Mata Ji again. I will not take much time. You are the really Rana well-wisher. That's why you are here. You are not thinking to go home, because still you want to see, we are winding up and you are supporting still last moment. So I really appreciate that still you are here and you have the heart that you are basically supporting to Rana. My just 2 minutes I will take. As a NEC president, I work closely with my team, and we have no issue internal. All NEC member, they work, and everybody said that we have to do this, but who will do that? We have to start. So the first responsibility is you expect from the committee, right? That's what we have an election. So you expect from the committee. Now in the committee, people are putting a lot of efforts to come to elect. They spend money, they spend time, lot of time and money to come just elect. And after the election, they hardly spend 1/3 time, whatever they spend in election, they don't work actually practice. Not all, but there are few members, selected members in committee, they are not really working. So as all you seniors, to put your plan, your vision to implement, let the all committee members, whatever their individual portfolio, they should really, if they don't have interest, please do not contest. Please back out. There are other people, those who really, they don't have more money or they don't have, but they have time. They want to, so that's how we implement
to implement, we need the good committee members. They have to individually good work with that portfolio. And as Ridhiba said, we need really youngster. Nowadays, we are lucky that most of our chapter presidents, they are really younger than much more me, like Abhishek ji, Navneet ji hai, even apne DC chapter ke hai, Binay Ranjan ji. Most of the current chapter presidents, they are below 40 at least, 35, 40. So they are comparatively, they are younger. So now that trend is coming. If they do good in chapter, they can easily, people will vote for you. You don't have to marketing yourself, you don't have to campaign. Just do your work in the chapter level. Definitely you will come back. Just like Narendra Modi, he did good job in Gujarat. Automatically he came to Delhi. So please, whatever your responsibility, whatever the position you are, just think about Rana, positive think about Rana, and just do your best. Thank you. Thank you, Gajendra Singh. We have a lack of time. So, let's go fast. 1 minute, half minute. I request. Yeah. So let's finish the ladies first and. Ladies first होनी चाहिए. तुम बोलो नहीं आप बोलो. आप मेरे लिए बोल दो. अच्छा चलो. सभी को सादर नमस्ते. मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ. सभी महानुभावों ने अच्छी बातें कही हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मेरी जो उलझन है वो ये है कि यहाँ हम बैठे ज़्यादातर 95% लोग हम हिंदी समझते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा को या अपनी राष्ट्रभाषा को क्यों भूल जाते हैं? हमारे बच्चे कैसे हिंदी सीखेंगे? हम हिंदी तो बोलते ही नहीं उनसे. उर्दू बोल देंगे, पंजाबी बोल देंगे, दूसरे लैंग्वेजेस बोल देंगे. हमारी तो समझ में नहीं आता, हम क्यों नहीं बोल सकते? मैं अपने को कहती हूँ हम इंग्लिश नहीं समझते. हमने आप लोगों ने जितना कुछ नहीं समझ में आया, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मेंबर बनाने का हम बहुत मेंबर लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो क्यों निकल जाते हैं? जो मेंबर बनते हैं यहाँ से निकल क्यों जाते हैं? राणा ने कभी किसी ने सोचा क्यों छोड़ देते हैं राणा, कि राणा हमारे लिए क्या करता है? तो आपकी बात भी जो कही, पैसे की बात भी होती है, ठीक है, मेंबर बन गए, लेकिन कोई तो चुंबक ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि उनको आप बांध के रखिए. वो कोई करता नहीं है. और यूथ, सही बात कह रहे हैं, हमने कितने यूथ देखे. मैं आपको 50 लोगों का नाम और पता देती हूँ, फ़ोन नंबर. आप उनको बुलाइए, वो पूछते हैं कि मासी या आंटी हमारे लिए क्या है वहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं. तो यूथ, सही बात है, यूथ को ही, क्योंकि मैं बहुत यूथ को मिल चुकी हूँ. दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, गिव देम चांस. क्योंकि हमारी बात अगर नहीं मानते, हो सकता है अपनी एज ग्रुप की बात वो माने, तो आप उनको दीजिए चांस. और देखिए, हमको जो कुछ करना, मैं हमेशा दिल से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ये राणा हमेशा सलामत रहे, भगवान इसको खूब समृद्धि दे. लेकिन दुख ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं अब फॉरगेट इट, राणा नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या हम राजपूत नहीं हैं? ये बात नहीं है. उनको समझाना हमारा धर्म है, हमको क्या करना है ये बताना चाहिए. आप अपने आप से अशेम, दूसरों के सामने जाएंगे, बताने में भी उनको मुश्किल लगती है कि हम राजपूत हैं. दैट मीन्स यू आर अशेम्ड. अपना ऐसा कुछ काम करके देखो. मैं तो जहाँ भी रहती हूँ सभी जान जाते कि जरूर राजपूतनी होगी. मैंने कहा दैट्स व्हाट आई एम. अपने पर रखिए भरोसा ना, और उनको बताना चाहिए. और चांस देखिए, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं. सही में सबने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है. ये कोविड के उसमें इतना बड़ा हो गया, बहुत अच्छा है. लेकिन जो नए लोग आते हैं, बहुत लोग बहुत सैड एक्सपीरियंस लेके जाते हैं. हम उनको यही कहते हैं कि नहीं, मैंने तो 94 से 9 ज्वाइन किया है, और कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके राणा फंक्शन में मैं पहुँचूँ. चाहे मेरे बच्चे हमें अपोज भी करते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं बेटा हमको जाना है. आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद दैट. मैं अपनी, कि मैं कहाँ से आई, मैं अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहती हूँ. लेकिन जब हम सबको धन्यवाद देते तो हमको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए उन मेहमानों को जो आए हैं अटेंड करने. वो नहीं आते तो आपका सारा इंतजाम धरा रह जाएगा. उनको तो आप धन्यवाद. लोग दूर दूर से आए, टेक्सास से आ रहे हैं, टेनेसी से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं. आई एम सो अमेज कितने लोग ने इतनी कोशिश की और यहाँ आ गए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है. सबको दिल से, सबको मैं सादर नमस्ते करती हूँ. मेरी कोई बात बुरी किसी को लगी है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ. और प्लीज़
जातियों से सहयोग रहे, निस्वार्थ ढंग से हमें सेवा करनी है। अपनी पोजीशन या उसके लिए हमारे जो भाई बहन कमज़ोर हैं, हम कुछ उनको ऊपर अपने बराबर में लाना है, साथ में लाना है। ये नहीं कह कि ये कमज़ोर है, ये बीमार, इसको टरका दिया, ऐसे नहीं चलेगा। हमें साथ मिलकर, अगर हमने इतिहास से नहीं कुछ सीखा तो लानत है हमारे राजपूत होने पर। धन्यवाद। Thank you very much. I want to request everyone to round up the applause for the family. I think, as Mahavir told, the family coming from each and every convention from first. Thank you. Let's go to the. Okay. Yeah. So, thank you. After Jayashree Maheda, if we don't give her a chance, then we can't get the finance. So, Jayashree Maheda and then Monaba. Namaste everyone. I just have I'm just going to do a survey. Whose kids have married outside of Rajput community here in the US? Just raise your hands. Everybody got the question? Right? So what I just want to suggest to the incoming committee is, if these kids born and raised here are marrying any other community, I'm not saying out of context about Americans and other religions, but even if they are Indians, and I was very proud to meet Usha ji's daughter-in-law who came all the way from Tennessee, and it didn't seem that she's not a Rajput. As somebody pointed out, that Rajput is about karm, right? So if the new generation, and how many of them, they are in their 30s and 40s and they've married outside, those who were Rana kids have stopped coming. Just because they, chose a life partner who was not a Rajput. But of course, their kids have to have something, right? Like me being from Maharashtra and my husband being from Gujarat, we are still Rajputs. But does it make my kids less Rajput than, he marrying a Gujarati Rajput, right? So over generations, I think the new committee who comes in, my request is, how can you get those Rana kids who were born and raised in Rana, have married outside the community, how can they be members? And I think it's a very ongoing debate. And to moving forward with time, I think that can of worms needs to be opened and thought about. Thank you. Let's go to the Monaba. One. Jai Mataji to everyone. Namaste. It was really nice meeting. I know most of the people here, but there are a few new members that I met, and it was really nice. I'll just take 1 minute. I think we have covered basically all the points. I have a point that might make sense. Hamari community mein, there is no such department or website where seniors or women, or if women have any problems, personal problems, marital problems, issues, who do they go to in Rana? We have to have a department or a website where people can anonymously report or get advice without the whole Rana knowing about it. People hesitate to go because, pata chal jayega to kya hoga. Hey, you need a hand. Support karo. ज़रूरी नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. And it goes for everyone, even seniors. हम लोग ख्याल रखते हैं पेरेंट्स का, अडल्ट्स मतलब एल्डर्स का, लेकिन ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जहाँ पे without any hesitation people can go and get help. बाकी सब तो हम करते ही हैं, बाकी सब कुछ तो हम करते ही हैं, लेकिन we have to have a resource, and that's my request to Rana. Thank you. Thank you, Monaba and Jayashree. So now, we go to the two youth. One for herself and then Abhishek. Where is Abhishek? Otherwise, he won't allow me to go Canada. So this was thrusted upon me within the last minute, so I'm trying to make it coherent as possible.
This is obviously my first time here. I was brought along not out of, oh, what is Rana and excitement, but mostly because of my dad and his excitement. So I think someone made a comment about that, and definitely fall in that category. But as far as how to entice youth, I'll be honest, I don't know my history. I don't know the culture. I know American history, I know American culture, and to be quite frank, I don't know how many of the youth they're going to be enticed by, oh, come learn their history and the culture of, where we're from. I think that is important, but I think, to me, issues that are really important is what does it mean to be an Indian American in the current context? And I think if there are conversations like that happening, I would definitely be interested, because I'm sort of confused. I wasn't born here. I moved here when I was 8, and so I am Indian more than some of the other kids, but I'm also American. When I go to India, I don't feel Indian. So I think conversations around what it is to be a young person, an Indian American, we're seeing, Indian Americans lauded, like Kamala Harris, what is she to us? I think those type of conversations are going to entice the youth more than our history and our culture. And I think that's where we look to the elders to help inform us. And I think that's all I can come up with on the top of my head in the last 5 minutes. So thank you so much. This is lovely. Just like I want to understand, like, is anybody in hurry to go? Like, because I wanted to give chance to each one of you at least 1 minute. If somebody want to say, we need to give their time. So if anybody is really in rush, if maybe extend like another 15-20 minutes, if that's fine, I want each of you listen from each of you at least for 1 minute. Yeah. Okay, so let's go on. Let's give chance to each of you. Thank you. So Abhishek, and then whoever want to join, please raise your hand and I will come to you. Yeah. First of all, thank you very much to giving us that wonderful foundation so that we can stand on it, we can utilize it and change the world. We have ample opportunity to make the changes. Before I'm going to start my point, I would like to answer her question, Akanksha's. She said that I don't know my culture and all these things. Your simple culture is we can not only preach, we have the something in our DNA, we will implement. And if you start preaching along with implementation, and no other races have that much of quality, like Rana Pratap you can take as an example. So whatever we can talk, we have the guts, we have the blessing of God, we will implement it, right? Like this hotel. Somebody talk and someday they made it. So come to the point, like I would like to modernize this Rana, because way back in 1980s we have made it. So this is the right time when we have the enough membership, enough support, all these things are there. So slowly we should think like that, what are the 3-4 things which rule the society? Like we need to think about the education is the best, economy, healthcare, all these things, and who will carry forward these things? These youth and women. If women will restrain themselves, we are not able to do that thing. So with the help of Rana platform, when I'm saying Rana modernization, means Rana needs to think beyond their community. I want to make Rana as a leadership factory to develop the leader like you, right? So who will go and people will automatically recognize you because whatever you are going to say, you are going to implement it, right? When you start thinking about, I not have to think about myself, I have to think about the community, the needy people, how we can serve. This is the Rajput, right? My brother was asking, right, what is the Rajput? I have to say my kid. Every day I said that. Your responsibility is not your mother, father, sister and all. You have to start thinking the advocacy, how you can go and stand in front of the people and ask the question. You have some there. I'm very happy when the black and white race kind of thing, activity going on here in US. And one of our Rana's leaders' daughter, she stood because of the black people are not getting treated well in New York. And she spit on one cop because you have free, right? Whatever you want, you can write. Media can write. They can make you right. They can make you wrong. But I am standing with that girl and I salute her guts. She spit one cop. I know legally it is not good. We are not going to encourage that thing. But the circumstances was wrong. They were poking her.
They were poking her when the camera was not capturing. And she was fighting for the poor people, for the black people who don't have the rights and all. So that is the best thing. That is the thing. The Bapu, when he see, right, we all have the greed. We all have jealousy and all these things. But beyond that, we have to think. So Rana is a wonderful platform, but this is the right time when we all people have to sit down together and create another framework. We need to participate. We need to start thinking about this country also. We need to run the homeless center here also, right? And each one of us are the leader of the society, right? Rana automatically glow. What Modi did, he gave, India was known as like a country of slum area and all this, right? Modi gave the best presentation of India. No, the knowledge, the wisdom start from here. So we have to build on Atit, right? We have Atit ki neev pe, we have to develop the Bhavishya, future, on the foundation of our, these people, whatever have created. You know that this is the, Rana is my backbone. And I know that if someday I will fall down, these are the people who will pull me again in their lap. And I don't have to think about that. That's why I am able to do, I'm not able to do my whole chapter, my whole community. They are able to do some exceptional work. And we are creating the impact slowly. I'm getting the confidence because of them, right? Thank you very much. Thank you, Abhishek ji, for wonderful word. Yesterday you have a very good poem. And then following today morning, a very good presentation about Maharana Pratap and today's words. And now I can go to Canada. Okay, I will come. मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ. नवनीत ने पॉइंट रेज किया था कि राणा का या राजपूत का, हाँ ओके सॉरी, राणा का या राजपूत का यूथ के कॉन्टेक्स्ट में या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे उसको देखेंगे. तो मेरे दिमाग में ये है कि किसी भी कोई भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होने के लिए ये इम्पोर्टेंस होता है कि वो उस पार्टिसिपेशन से वो क्या लेके जाएंगे. तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यूथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब वो कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो सब एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स जो है आप बना दीजिए कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हम सेमिनार करेंगे या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है. और उसको करने के लिए फिर हम अपने कल्चर का इस्तेमाल करेंगे. लाइक राजपूती जो एक मतलब आपके अंदर जो एक इमोशन पैदा करती है कि भाई राजपूत का मतलब ये होता है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो केवल हम अपने लिए ही नहीं सोचेंगे, बल्कि उस एनर्जी को हम सबके लिए कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एनर्जी आपको मोटिवेट करेगी कि हम राजपूत हैं और हम कोई भी चैलेंज को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, और हम केवल अपने लिए ही नहीं जीते हैं, हम सबके लिए जीते हैं. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो सीनियर्स हैं, मतलब यूथ के लिए जो सीनियर्स हैं, वो उनके गाइड रहेंगे बेसिकली. तो जैसे यदि मैं कोई किंग का किंगडम यदि मैं देखता हूँ, तो राजा जो होता था वो मतलब पूरे राज का शासन देख रहा, सब चीज़ें व्यवस्थित हैं कि नहीं है, चल रही हैं, कैसे चल रही हैं. लेकिन उनके जो मंत्री होते थे वो उनको गाइड करते थे. मतलब तो यहाँ पे मंत्री जो होंगे वो सीनियर्स होंगे, जो राणा के जो सीनियर्स हैं, और जो यूथ होंगे वो उसको ड्राइव करेंगे, वो राजा का काम करेंगे. और मंत्री जो है वो मतलब जो सीनियर्स हैं, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझिए कि वो प्रजा है, राइट, जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व करनी है. तो वो अलग अलग ग्रुप ऐसे बना करके जब हम उसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी वुमेंस का भी आया, उनके भी इश्यूज हैं, तो चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे वो वुमेंस हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो इनफैक्ट छोटे बच्चों का भी हो सकते, क्योंकि उनको ठीक है हमने यूथ की बात की, लेकिन छोटे बच्चों को भी वो यूथ होंगे कभी, तो वहाँ से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी. आई थिंक हमको सोर्स से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इसलिए नहीं हो गई कि आज यूथ में हो गई, वो बचपन से ही हो गई हो, क्योंकि उनको कल्चर नहीं मिला, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिला, राइट. तो वो हम जब सोर्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए ही राणा में अपनी जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो हमारी फोर्स है.
मतलब वो एक तरह से हमारी इनर स्ट्रेंथ है, उस इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करके और उसको जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये इन टोटल इस चीज़ों को हम देखेंगे शुरू से, मतलब एंड टू एंड, लाइक बच्चे से लेकर के सीनियर तक उसमें सब आ जाते हैं, मतलब चाहे वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, बच्चे हो, सब कुछ आ गए। तो ये मेरे दिमाग में मतलब ऐसे आया आइडिया कि राजपूती आपका कल्चर हो, आपकी सोच हो और आपका जो करने का तरीका जो है वो राजपूती कल्चर से आएगा, और उस प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व करेंगे आप गाइडेंस में करेंगे सीनियर्स के, और तो इससे क्या होगा, आई थिंक हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में आया थी। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. I request Aishwarya for her input. Let me say one thing, like as for me particular, very thin line as one of the candidate and the convention committee convener, and I try to justify as I can. But same time, thank you to all three teams and who are running independently also. The way Avansi and his team also supportive, Pradeep ji also very supportive, and same way Rambaji refer her. She called me before I think 1 month, and she want to join convention committee, and then she eventually very helpful in a cultural team. So let's and she is from youth. So we have many odd situation, as many people suggest where you don't have a youth participant. We have example also like that way, and she come forward and join with us. Thank you. Thank you so much, Naresh uncle. So it has been amazing being a part of Rana convention, and मैं चाहूँगी कि future में भी youth ऐसे ही involve होते रहे. So I think one thing that is very important to get our youths involved is to create a space where they feel like उनके according activities हो, उनके interest की activities हो. I think just providing a space to brainstorm their ideas, to provide a space where they can have more entrepreneurial growth, where they feel like वो अपने career में भी advance कर सकते हैं, तो वैसे involve होके बहुत better होगा. Maybe we can also create a WhatsApp group for all the youths, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा involvement होगा. So yeah, that's my idea. Thank you. Thank you. Thank you, Akanksha and Aishwarya for speaking up. I think one way, मैं just 5 seconds लूँगा. What we want to see in 5 years, that both of you are the best friends, and I also want both of you to be in the youth committee, which one of the presidents will form. And you are the two ones who stayed till last and have expressed your opinion. Now make it a reality for us by being actively participating in the committees. Thank you, Ramanji. So if anyone, otherwise we go to our treasurer. He's also waiting from long time, and so let's invite our treasurer. He has a very tough time, and we all need to support him and whatever he say. And this is our startup. We have many advice and good advice. So as he requested, we need a support. We still need a support convention, part of finance. So please come forward as we say. Thank you, भाई साहब. जय माता जी, खमा गणी. उषा जी ने कुछ बोला कि हिंदी में बोलिए. मैं पूरी कोशिश करूँगा. बीच में थोड़ी इंग्लिश हो जाएगी. खूब खूब धन्यवाद सबको यहाँ जो आए हैं, जिन्होंने वर्चुअल प्रेजेंटेशन करा है. कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ऐसे आपको फिगर दे देता हूँ फाइनेंस की तरफ से. एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, एजम्पशन है. जितना डेटा मेरे पास था उसके मुताबिक मैं दे रहा हूँ आपको. टोटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर 200+ लोगों ने रजिस्टर करा था अपनी वेबसाइट थ्रू. उसमें से करीबन 120 लोग यहाँ मौजूद थे, प्लस वर्चुअल में गिन सके लगभग 50 के ऊपर हो सकते हैं. और पैसे के लिए आए तो अपन थोड़ी टाइट पोजीशन में है. फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज़ नॉट द रीज़न दैट मिसमैनेज किया गया है, नहीं.
इस कोविड टाइम में और जो मीडिया में सब चल रहा है, राणा के मीडिया में, यस, उसने बहुत ख़राब अफेक्ट करा है। लेकिन आप सब यहाँ आए और पार्टिसिपेट करा है, वो सफलता बताती है कि कोई भी कुछ नेगेटिव बोले हम नहीं जाएंगे। थोड़े वक्त में इसको सफलता करी है। मैं हर पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ। होटल नई है, काफ़ी डिस्काउंट दिया गया। सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये हॉल का। बेसिकली अपन हॉल में कहीं भी मैंने देखा है 20 से 25 हज़ार खर्च करते हैं, इट्स $0। सो उनका धन्यवाद पूरे होटल मैनेजमेंट को दे रहा हूँ। और अपना गर्व होना चाहिए, वो राजपूत हैं, इस संस्था के मेंबर्स हैं और नॉन राजपूत भी है इस मैनेजमेंट में। उन्होंने भी अपन को साथ दिया है, तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, आप जान रहे हैं उनको, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे पहले महावीर भाई को थैंक्स कहा, स्पेशल थैंक्स, यस, लास्ट मिनट में पर्सनल अटेंडेंस दे के, फूड से लेके कल की बोट राइड, बस में बैठे, जहाँ हमने हमारी बस में संगीत की महफिल मानी, वो सफलता। और इस कन्वेंशन कमेटी सब मेंबर्स जो कमेटी में नहीं भी है, उन्होंने पूरा साथ दिया पूरे दिन, इस 2 से 5 तारीख तक। अभी मैं बोल रहा हूँ तब तक उनको श्रेय जाता है। खाने में सबको सेटिस्फाइड है, उसमें कोई भूल नहीं है। छोटे बच्चों से लेके, मैंने देखा है पीछे बैठते थे बच्चे, उस कॉर्नर से आते वहाँ एप्पल जूस और वो जूस पीते रहते थे। कुछ चिल्लाना नहीं, या बच्चों की तो आवाज़ होती है, अपन भी बच्चे थे, आवाज़ करते थे। और हर फंक्शन में एक चीज़ है, यदि बच्चे आनंद ले पाए और उनको अच्छा लगा, ये पूरा फंक्शन सक्सेस गया, और वही है। और इन द एंड फाइनेंशियल स्टेटस में वी आर नेक ऑन नेक। मेरे पास पूरा नंबर्स नहीं है, पर मैं आशा रखता हूँ जो मेरे यहाँ वडील हैं, जो कितना भी कंट्रीब्यूशन दे पाए और हम उसको इस कन्वेंशन का भुगतान पूरा कर लें। और इसके सिवाय मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, शायद आप समझो या ना समझो, लेकिन सीरियस मत हो जाना। ये मेरा पुराना, मेरी जयश्री हंस रही है, वो जान मैं क्या बोलने वाला हूँ। दिस रिलेट्स, सब ने बोला राणा कैसा है, क्या समझना चाहिए, उसके ऊपर है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, वही समझने की चीज़ समझनी चाहिए। आप नहीं समझे तो बोलिए, हम समझाएंगे वापस। वही समझना है, समझना हमारी समझने की बात है। नहीं समझे तो समझाइए। हर चीज़ को समझानी चाहिए, समझना चाहिए, वही हमारा भविष्य का समझाने की चीज़ है। धन्यवाद। Thank you. And a round of applause for our treasurer. हरदेव भाई साहब बहुत अच्छा, और आपसे प्रेरित होकर हमने भी सोचा कि कुछ हम हिंदी में ही बोलें, और उन्हीं की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसा हरदेव भाई साहब ने बोला कि फाइनेंशियल का सारा रिपोर्ट अभी नहीं है हम लोग के पास, कि बहुत सारे वेरिएबल हैं, कि होटल का भी कैलकुलेट नहीं हुए, क्योंकि उसमें कितने लोग आए, कुछ एडिशनल आ गए, कुछ ड्रॉप किए,
तो जो फाइनल कैलकुलेट होगा होटल का तो मेरे पास आएगा कितने नंबर हैं। सेम फूड का भी वेरिएशन हुआ। पहले हम लोग 150 बोला था, फिर 125, फिर 110, तो किसी दिन 125 हुआ। तो एग्जैक्ट नंबर फूड का भी नहीं है हमारे पास, ये नंबर एग्जैक्ट है हमारे पास, जो वीडियो का है, ऑडियो का है, फोटोग्राफी का है, और वो सब नंबर हैं। लेकिन ये वेरिएबल को हम लोग अभी तक जो एस्टिमेट किए हैं उसके हिसाब से अराउंड 11-12,000 डेफिसिट में है। हो सकता है 1-2 हज़ार ऊपर जाए, 1-2 हज़ार नीचे जाए। तो हम लोगों ने बैकएंड में काम करना धीरे धीरे शुरू किया है। धीरज बाबू जी और लोगों से काफ़ी इनडायरेक्टली हम लोग बोला है, और विजेंद्र जी काफ़ी इसमें ऑलरेडी अग्रेसिवली लग गए हैं। इन्होंने कुछ ऑलरेडी प्रॉमिस भी कर दिया है। तो विजेंद्र जी बताएं, आपने कुछ बोला था कि आपने सुनील जी ने कुछ बोला था, तो बताएं और थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा हम लोग को, तो उसी हिसाब से थोड़ा अग्रेसिवली और लोगों को भी हम फॉलो अप करेंगे। जो नहीं आ पाए हैं कन्वेंशन में, जो पहले प्रॉमिस किए हैं, तो उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे हमारा कवरअप हो जाएगा, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू भाईजान। थैंक यू। तो सुनील जी से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कुछ थोड़ा बहुत लॉस आएगा। तो अगर लॉस आता है तो सुनील जी की तरफ से 500 और मेरी तरफ से 500, तो हम एक्स्ट्रा इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो और सभी लोग भी जो भी हैं यहाँ पे, जितना जितना जो करना चाहें प्लीज़ अनाउंस करें। तो उधर 500 मैं भी दे दूँगा आपको कैश, आज ही दे दूँगी। ओह गुड, तालियां। हाँ, यस, एवरीबॉडी नाउ गोइंग थ्रू। आप मैं तो मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता ये हुई कि आपने मेरी पुत्रवधू का जिक्र कर दिया, और मैं अपने बेटे को और बहू को जो ला पाया उसके पीछे प्रदीप जी का हाथ रहा। और मेरे पोते भी आए जिनको यही नहीं पता था इंडियन क्या होता है। और जिस तरह से संचालन व्यवस्था ने बात की है युवा वर्ग को जोड़ने की, मैं 11 वर्षों से अमेरिका में हूँ सर, और मुझे बहुत आत्मा से दुख होता है कि ये भारतीय लोग, मतलब मूल के बच्चे, दे आर रियली लॉस्ट। उनको शर्म आती है, और राजपूत तो कहते हुए उनको बहुत शर्म आती है। अपने आप को राजपूत तो कोई कहना ही, कितने मेरे बेटे ने चिंगाड़ के कहा, आप लोगों ने सुना हो कि पटेल और समाज वालों ने एक दूसरे को कैसे उठा लिया। राजपूतों की कहीं गिनती है? राणा किस लिए है अगर हमारी गिनती ही नहीं है? मैं क्यों आता? वो आया है, समझने की कोशिश कीजिए। और ऐश्वर्या और आकांक्षा का ये भी बैठी है, बेटे संभालो। मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहूँगा, मंजिल मिले मिले न मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। Thank you. We have a wonderful session today, and I am going to go for Dhiraj. Let's thank the camera people. I'm going to hold on. Let me give Dhiraj Babu. Hold on. I think we are missing the point, and this is I think every convention I left, from Canada to California to other places, we don't have a deficit when we leave. And we cannot leave deficit on Rana's shoulder. तो प्रदीप जी को राणा में बोले कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया, वो होटल में से ले गया ना। सो मैं कह रहा हूँ कि लेस विद अ ब्रॉड हार्ट। उसने बताया चिकेन सिंह ने कि भाई कहीं 10-8 ऐसे कुछ कोट होगी, अपन लोअर ट्रायल के जाएंगे। तो लोअर ट्रायल आज का होगा, we should collect $7,000. You can only collect $1,500 so far. So I'm going to start with me, that I will give $1,000. I don't know how to ask, so Vasabha give $1,000. Then Pradeep has to give $1,000, you like it or not. And Avanji has to give $1,000. अभी क्या करें? तो दोस्त है, तो दोस्त बिना कहाँ जाऊँ मैं? दोस्त के बिना तो चलता नहीं है। प्रकाश ही has to give $1,000.
Bapu, what I can force them, no. Do I know that I can get the money from them? Bapu साहब, नहीं बोलिए ना. Okay. But Riddhiba gave $500. Sorry, Siddhiba gave $500, and Riddhiba also gave $500. And Pratap Singh gave $500. हैं? किसका? नहीं, वो बोलेगा ये करना है. अभी किसको करना है? हाँ, $500. देखो, एक चेक वहाँ इतना खर्च किया आने बाद भी वो $500 थे. नरेश gave $500. Somebody write that? Yeah. नहीं यार, और KNC give $1,000. कुछ चलेगा नहीं यार, वो पिज़्ज़ा वो सुनील को कुछ देना, उसको तो $1,000. सुनील गजेंद्र सिंह सुनील $1,000. 1,500 सुनील लिखो. गुरु ने बोला है, गुरु जी ने बोला है. नहीं वो मैं नहीं कह सकता. चावड़ा साहब तो देंगे नहीं, सबका पैसा तो वो संभालता है. सुन लीजिएगा भी वो संभालता है ना, तो उसको पूछना चेक लेके दे देना आपका $500. नहीं 500 कितना है? 1,000. ओ गुड. मैं बच्चा भी अच्छा हो रहा है. फादर बोला हैप्पी व्हेन यू डू बेटर. Now Rana is surplus, so that's जानते हैं कि यहाँ आएगा तो ऑटो में आएगा घूम के. No, अभी से कि $250. राजबाबू के $500. नहीं राजबाबू को जो बोले हुए मर कर रहा है, ये हमारा भाई है यार, छोटा. हो गया? No, 250. बच्चे के पास कम लेना. मेरे बच्चे देखो, मैं मेरा ग्रैंडसन को बोलता हूँ तो कितना, कल जा रहा था बोस्टन में, कितना पैसा चाहिए? बोला कि हमको नहीं चाहिए, कार्ड है. बोला कि $100. मैं मानो उसको 200 दे दे उसको. उनके सब क्या ना YPS तनवर. आपका नाम लिखना पड़ेगा ना. मैं यंगस्टर्स को इनवाइट कर. नहीं, उसने बोल दिया. नहीं नाम इसका. नहीं, उसके बेटे का नाम बोलते हैं. क्या? यशपाल सिंह तनवर का $500. कौन सा? कौन? प्रदीप कौन? ओ या उसे $500 पहले दिया, आपने दे दिया. ठीक है. किसको? नहीं वो तो कोई बात नहीं. तो देखो राजपूत को, राजपूत का क्या है, आपका लिखो कुछ. Oh, Vikram, can you contribute some? You want to contribute? Fine. Oh, Vikram will give $500. Okay, anyone who are going to donate, I would appreciate if you can transfer. आप Zili से भेज दीजिए. चेक को तभी सेंड रिमाइंडर प्रकाश जी ने जेल में डाल दिया, अभी हो गया. Zili से भेज दीजिए. आपका पेमेंट आप Zili से कर दीजिए ट्रांसफर, और चेक से. सो ये बहुत इजी रहेगा ट्रांजेक्शन के लिए. अभी देखिए उसमें रिमाइंडर नहीं चाहिए प्लीज. आपने जो कहा है वो देना, बस चेक पे साइन जरूर करना. अगर चेक से भेजे तो बिना साइन वाला नहीं चलेगा ना. इसीलिए तो मेरे बेटे का नाम लिखवाया था. So I'm thankful all of you for love and affection to me, and the Rajput has this type of guts for Abhishek Singh. और दूसरा यही है कि वो जो अपन वचन देते हैं वो करते हैं.
भगवान की कृपा से, राम की कृपा से होता है। तो अभी जब मैंने सोचा तो मैं तो नहीं कर रहा था ना, मैं हनुमान जी को याद करके बोला कि तू पूरा कर, तो उसने पूरा कर दिया। So let's say only today I was praying, every day I pray, come down before that I pray 45 minutes whatever. So I pray हनुमान जी कि ये उसका सब ठीक हो जाए, जानता था कि मुश्किल ही है, तो उसने कर दिया। तभी उसको सौंप देता हूँ, तेरे गुजर से हुआ। तो लेट्स से तो सब सुनो, मैं एक चौपाई गाऊंगा, वो सबके मंगल हो। अब जा रहे हैं आप, भगवान आपको खूब खूब इंटरनल पीस दे। बाहर तो चलता है, जाती है, इंटरनल पीस ज़्यादा हो, ऐसा मेरा प्रार्थना है। आई प्रे हनुमान जी। एंड भगवान राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम। Thank you, Dheeraj Bapu. Really appreciate you. You initiated and we collected almost $15,000 right now. So I appreciate everybody. Those who donated, even not, still you are here. That is also a very good support to Rana. And before I talked to Kensingh that we should collect more money from those who really have not attended here. That is our goal, that those who are not present. Yeah. So that we will do. Thank you again. Thank you for that. देखो, जब पृथ्वीराज को युद्ध में जाना था और युद्ध में पिताजी हार गए, अकबर ने कैद कर लिया और उसका चामुंड उसने बिठा। अभी उसने पृथ्वीराज को वहाँ अकबर को उसने बोला कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा बाणावड़ी है, तो उसको बोला कि मैं इधर बैठता हूँ, और वो शब्द से बाण छोड़ता है तो आदमी की हत्या हो जाती है। तो पृथ्वीराज ने बोला कि मैं तो नहीं चलाऊंगा बाण, कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि हम हथियार नहीं धारण करेंगे, मालूम है ना आपको। तो उसने जब चामुंड ने पृथ्वीराज को बोला कि आप यहाँ बैठेगा, मैं शब्द से बताऊंगा, आप उसको बाण छोड़ो, वो मर जाएगा। तो पृथ्वीराज बोलता है कि चामुंड, तू जो मेरे साथ में सेनापति था, तो मेरा एडवाइजर था, अब तू मुझे बता रहा है कि प्रतिज्ञा तोड़ दूँ? मैं तो राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं नहीं तोड़ूंगा। तब चामुंड ने बोला चामुंड को, सुन, प्रतिज्ञा लई અને લીધા પછી તે પાળનારા કોક છે, प्रतिज्ञा લઈ અને પાળે એની જિંદગી ભોગ છે। Just giving you update, carry on what you guys doing. I'm going to warm up a little bit down in the bath, so make sure. And for kids, it will be pizza order. Please stay there. Actually, we have concluded ceremony, so don't go out of the hall, please, for 5 minutes. 1 minute. कहने में तो अपने पास काफ़ी है, काफ़ी बातें कर भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। हर किसी को उल्लास भी हो जाता है, जिज्ञासा भी हो जाती है, अपन बोल देते हैं। मगर मैं तो ज़्यादा समय लूँगा नहीं आप सबसे। और सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अब लगभग कंक्लूजन में आ रहे हैं। कंक्लूजन में I will speak a little bit, then I will have Naresh ji and then Gajinder Singh ji will end the convention today. And एक तरह से मैं आपको रिकैप करके बताऊंगा। सुरेंद्र पाल सिंह जी जो गए कल द्रोणाचार्य का एक्टिंग किया था उन्होंने महाभारत में,
उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। उनकी भाषा की शैली ऐसी थी जो वो पैदाइशी से नहीं थी, मगर उन्होंने जो अपने कर्म और जो सोच थी उनको द्रोणाचार्य का एक रोल दिया। उस रोल से उन्होंने अपने आप में अपना लिया। तो उनका एक एक शब्द सबको एड्रेस करते हुए एक तरह से द्रोणाचार्य गुरु की तरह ही उन्होंने सबको सम्मान किया था। तो ठीक उसी प्रकार अपन सब बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं, अरे ये होना चाहिए, यहाँ पे इतनी कमेटियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए और करना चाहिए और चाहिए से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। व्हाट आई कैन डू एंड दैट्स हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग एंड दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग। जिस तरह से अभी आपके सामने एक उदाहरण है सबसे बड़ा, कि सुरेंद्र पाल जी ने कहा था कि दुनिया में अपने वडीलों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपकी पहचान उनसे है। अपनी पहचान अपने एल्डर्स से है, अपनी कोई पहचान नहीं थी। आपके सामने ही अभी एक लाइव एग्जाम्पल है, धीरज सिंह जी बापू ने जो परेशानी थी, सब कुछ सोच रहे थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, आपके सामने सोल्व कर दिया। किसी ने भी सोल्व करने की किसी सोची नहीं थी। तो अपने जो एल्डर्स हैं उनकी इज्जत जो नहीं करे, उसको आपको सबसे पहले खड़ा होके उसको या तो एक साइड में ले जाके उसका कान पकड़ो, मगर हाँ अपने जो एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना उनको भी सिखाओ, क्योंकि उनमें संस्कार नहीं है और या भूल गए होंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड अपनी राजपूत की वैल्यूज़। यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि राजपूत की वैल्यू करनी चाहिए, नहीं ऐसा है। अपनी वैल्यूज़ यही तो हैं, सम्मान, अपनी संस्कृति है, अपन सेवा करें हर किसी की। हाँ समय समय के अनुसार चेंज होता रहता है। आज के तारीख में अपनी संस्कार यही है कि एक दूसरे की हेल्प करो जहाँ पे भी कर सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत तो करो आप कम से कम। जो अपने को माँ बाप ने अपने संस्कार दिए हैं उनका प्रदर्शन करिए आप जब अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो आपके मुंह से आपके माँ बाप की वाणी निकलती है, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, सिर्फ मैं एक हमारे यहाँ पे डीसी चैप्टर में हमारे राज बापू अगर नहीं होते हैं और कोई हेल्प हमारे कहीं पे भी नहीं होती है तो काम नहीं होता है। तो अभी भी वो कहीं दाल बाटी या दाल भात कहीं गर्म करने गए हुए हैं। तो राज बापू यहाँ पे नहीं, पर उनकी तरफ से हम नीलम जी को सम्मानित कर देते हैं। तो पति पत्नी तो एक जैसे होते हैं। और आज जब अपन यहाँ से जाएंगे तो आप सबसे बहुत से लोगों ने अच्छा बड़ा लगना व्याख्यान किया। व्हाट्सएप पे काफ़ी गंदगी मची हुई है, वहाँ पे अनशन बोल जाते हैं, हर कोई अपने अपने संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है, कोई अच्छी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। तो आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि जहाँ पे भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो बनाइए, राणा का नाम मत लीजिए। हमको न तो लीगल लैंग्वेज दिखानी है, लीगल प्रूव करना है, कोई वकील भी नहीं है, वकालत भी नहीं है। राणा एक रिस्पेक्टेड वर्ड एसोसिएटेड है हमारे साथ, तो आप उसकी इज्जत करिए, उसके नाम से कोई ग्रुप मत बनाइए। और अगर आप बनाते भी हैं तो पूछ लो कि किसको आना है, आप अंधाधुंध ऐड मत करना शुरू करो। अगर करते भी हैं तो आप श्वेता से ही निकल जाइए। मैंने खुद ने भी जितने भी ग्रुप में से मैं निकल चुका हूँ, मैं कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई भी अगर कोई बुराई करता है एक दूसरे की तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये गंदगी थोड़ी, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो गंदगी बढ़ती रहेगी, आप खुद ही निकल जाइए ताकि ये गंदगी थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अब मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा। हर मिलन के बाद एक जुदाई आती है, और इस मिलन में अपनों ने कुछ और भी मेमोरीज अपनों ने ऐड की है अपने साथ में। काफ़ी सहयोग रहा है आप सबका, काफ़ी योगदान भी रहा है आप सबका, लास्ट मिनट तक योगदान रहा है आप सबका। तो इस बार की जो मेमोरीज हैं हमने ऐड की हैं वो काफ़ी सुहानी हैं, काफ़ी सुंदर हैं। तो इसी तरह से हमें मौका मिलता रहे
और हम प्रभु से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आपका सहयोग, आपका प्यार और सम्मान मिलता रहे। इसी पे मैं आपसे विश्वास करता हूँ। Thank you, Surendra ji, and he's a wonderful, secretary part of convention committee. Round of applause for him. Thank you. So, as we are going the concluding ceremony, so I am going to thanks to from behalf of convention committee, following with the Gajendra Babu, thanks from NSC for NSC team. Tough time create a strong organization. Strong organization create a easy time. Easy time create a weak organization. And up to July 1st, we are at maybe that stage. But from July 2nd, as we come out from all odds and the way we gather, not to celebrate, but way we gather here, and we create a very, very strong Rana organization for future. Thank you very much for all. Ecosystem will develop when working together individually. When everyone understands importance of and necessity of other part of ecosystem, the organization will grow. And that's why we have election and convention parallel. But we still manage the Rana ecosystem, and that's why we are here with the support of all the candidates. Best of luck to all whoever come and support to Rana. I know I have a very tough job to thanks part behalf of convention committee. It is not easy and it's not within a one word, but still I need to process. So let me thank you all the speakers and dignitaries who gave their valuable time and enlighten our audience. Thank you our presidents and NEC team who always supportive whenever and wherever we needed. Thank you to all performers in person and online who show their talent and make this event perfect. Our special thanks to our platinum sponsor Narendra C. Chudasma. Please round of applause for him. Gold sponsor Pradeep C. Sengarji. Round of applause for him. And many of our pillar sponsors including Vijendra C. Tanwar, Avansi, Ridhiba, many other sponsors including magazine sponsor like matrimonial messages and greeting messages. So all the sponsors, thank you very much. And today with help of Dheeraj Babu and other seniors, we raised almost 15,000 I believe. So thank you all of them also. Thank you to all Rana members who always supportive, who join online and Rajput community from USA, Canada, UK, Kenya, Australia and our motherland India. Special thanks and round of applause for come forward to join in person. Who come? You guys are like a special like Rana member. In this odd situation also you take a risk and as per the current COVID rules and try to manage and you come and join us for like 3 day, like 3 night and 4 days convention. So thank you, round of applause for all the people who are here. Create your identity in such a way where people surely realize that ignoring or leaving you is only their loss. Live with uniqueness and dignity. This is the best example of our 3 senior, I always say here, like who come forward. Special thanks to Dheeraj Babu, Mahavir Singh and Sunil Singh ji. They support Lord this convention. It is not possible without their help. And other seniors also including Prakash ji and other seniors. This is exactly, I am going to those individuals and special thanks to our seniors. Thank you to the hotel staff. They are wonderful, as our previous speaker mentioned about hotel staff and our Rana member, they are partner in that of this particular property. So thank you to the hotel staff and management, production team, including Balaji. See, he's over there. Round of applause for Balaji and his team, photographer. They both are wonderful. The way they interact with our, like they are belongs to our Rana family, any organization in future also. As a photographer, and they do their duty wonderful. Mr. Patel, he is not here today, but his audio system part of he joined also. An online registration vendor from Hyderabad. Gajendra Babu worked tirelessly. I think midnight he sometime call him and message him and he support part of registration. So those vendor also, thank you for them. Last but not least, our wonderful convention committee. In my life, I worked with many social organizations, but I didn't see like this kind of wonderful team. And all the, I don't go through the name again, like as in the first days, go through all the names, but convention committee, including finance, culture team, sponsorship, IT, magazine,
our welcome team, sponsorship team. They all did a wonderful job. So as I mentioned before, also like we worked from 1.5 years almost and out of that 80% time we spend on like we have a convention or not. We have online convention, in person or hybrid. But yeah, they work tirelessly. If I count number of hours, maybe it's like 4 or 5 hours per week for 1.5 years. So it's the longest convention committee. Thank you, round of applause for the whole convention committee, including Chairman KN Singh ji and all other convention committee members. If I'm missing anyone, so please pardon me and our team. Thank you to all. Let me invite Gajendra Singh Bapu to thanks behalf of NEC and conclude the session. And Bapu want to say something. And after Gajendra Singh. No, he did say thank you to everybody. Especially, I want to recognize Vikram Singh and Jagdish. He made the tea. This is the first time they volunteered themselves. So all the tea credit goes to them. Thank you. The second thing I want to appreciate is all ladies. We can start from the Pradeep ji, Surendra Singh, aap. वो नहीं है यहाँ. They are not with you guys, but they supported. And a special thanks on my side go to Neelam. 24 hours and then she said, oh, you are with Rana. You are at 10 o'clock at night. You are in a meeting. So KN Singh, उसको भी credit देना है ना. Thank you. Thank you. So same thing, Varshaba. Mahavir joke, if he did something wrong, you are upset. It's not him. It's on our culture. We are, that's all we are and who we are. Sorry. Thank you. I just want to take maybe 2 minutes to say something. हम सबसे पहले तो सीनियर्स को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया. And from the beginning, I was like silent, जैसे उन्होंने कहा कि supporter. But I just wanted to say कि बहुत सारी negativity रही इस convention को यहाँ तक ले आने में. But हमें लगता है कि एक हमने कहीं पे पढ़ा जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर यकीन और उम्मीद रहे तो सब कुछ पॉसिबल है. सो यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाती है. सो जैसा आप ये देख सकते हैं कन्वेंशन जब बात शुरू हुई थी कि करना है इन पर्सन करना है या वर्चुअल करना है बहुत सारा डिस्कशन हुआ. बट फाइनली दिस आई वुड से कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से ईच एंड एवरी वन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. वी ऑल आर थैंकफुल. आई मीन आई वाज नॉट इन द कमिटी बट एज आई सेड आई वाज अ साइलेंट सपोर्टर कि ये कन्वेंशन इतना अच्छा पॉसिबल हो पाया. और एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग आई नो कि इलेक्शन हो रहा है तो हम सब भाई बहन हैं यहाँ पे. फिर हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस भाई को वोट दें कि उस भाई को वोट दें कि इस बहन को वोट दें. तो अगर हम इस चीज़ कुछ इफ़ वी कैन कम अप विद समथिंग कि देयर इज़ नो इलेक्शन आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. सो आई थिंक दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. बट और लास्ट में ये कहना चाहेंगे मौज लो और रोज लो ना मिलो तो खोज लो. थैंक यू सो मच. So I think next NSC think about the next chairman also if you want. We have. I want to invite Sonalba about the certificate for participation. Yeah, she just complete those things actually. Okay, we would like to give certificate to Abhishek ji and Hardev Si Maheda, right? If I am not mistaken, Hardev Si Maheda. Yeah. Sorry, like we don't have right now, but we can email you. And thank you very much कि आपने कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा और आप सब से मिलके बहुत खुशी हुई. जो सब यहाँ आए हैं इस सिचुएशन में कोविड का डर सबको है बट आई गेस कि हम सबसे ब्रेव है. दैट्स व्हाई वी आर हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सोनम्बा. हमने कल पूरे ग्रुप में डाला था एक मैसेज. आई थिंक सुनील सिंह जी ने आप पर्सनली सब काफ़ी लोगों को बोल चुके थे लेकिन यदि किसी को नहीं मिला होगा तो सबको इनवाइट किए हैं. वो ग्रुप में एड्रेस डाला हुआ है उनके घर का. सो बिटवीन 3 to 9. सो ऑन बिहाफ ऑफ सुनील सिंह जी आई एम इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू एंड basically early dinner or whatever. So it starts 3 o'clock till 9 o'clock.
whoever want to finish, go early. That's fine. Thank you. सुनील सिंह का हार्ट भी बहुत बड़ा है, ऐसे उनका डिनर टाइम भी 3 to 9 है. Anyone can go. Thank you. गजेंद्र बाबू. Okay, so many thank you, but this is the last final thank you. Vote of thanks. NEC decide basically to go for the convention. NEC selected the convention committee, and NEC work really very well with convention committee since last more than a year. NEC and convention committee. So this is my vote of thanks to the conclusion of this convention. On behalf of entire NEC committee and entire RANA members, I really heartily appreciate your support and thank you all who participate. Even still you are here. That is a very big. I'm really happy to see that you are still here, and those who joined remotely. I thank to all them also. And as our title is 12th Rana Family Convention and International Rajput Conference, so I think this time we really had a good international participation. So I thank to all different countries, those who participated and give the very nice message. Particular Surendra Pal ji ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, दिल को छू जाने वाला था, एकदम राजपूत स्पिरिट में जो बोले, बहुत कम बोले, लेकिन I still remember few words from him. तो मैं सबसे मेंबर को तो थैंक यू कहता हूँ. होटल वाल जो भी, आई एम प्राउड दैट ये होटल अपने मोस्ट ऑफ द राना मेंबर्स उसके ओनर है, तो आई एम थैंक यू टू सुनील सिंह एंड ऑल द पार्टनर्स. थैंक यू टू होटल मैनेजर, रियली सी एंड अदर होटल मैनेजर्स, दे रियली हेल्प वेल. लास्ट में वो डिसीज क्लीनिंग का भी इश्यू था, हु विल डू दैट, बट समहाउ दे मैनेज इट. एंड आई थैंक यू प्रदीप जी की बैकएंड में उन्होंने भी होटल में काफ़ी पर्टिकुलर ऑल दिस टेक्नोलॉजी वेयर द प्लग्स आर एंड वेयर द ऑल अदर इक्विपमेंट. सो थैंक यू प्रदीप जी. थैंक यू बालाजी. Without you it's not possible. Really within I think we decided just 2 days back before this new, and he really helped us in last moment. Still he is giving his service to us, so I really appreciate. Thank you Josh and Ramesh, both the photographers. I took them picture. Hopefully we will publish in our magazine also, so next time we remember and call them again. So really I enjoyed this convention, and I'm sure everybody enjoyed. Good food, good hospitality, and good to interact. We have a few less attendance, but it's good we know each other. Most of them we know each other, so that is very plus point. Thank you to US Land and back in India, those who give opportunity to arrange this kind of event. So thank you all seniors. Thank you. God bless you. Rana. Thank you. Let's go to Dhirej Bapu. And then we have photo, one group photo, please stay over here. I take very little time to raise more money. I know Dr. Sanjay Singh is here, not here, but on behalf of my confidence I can say that he will give $1,000. And by all, I'm apologizing to Dr. Chauhan साहब. मैंने देखा नहीं तो बोला ही नहीं चौहान साहब के बारे में, तो बोला कि हमको तो इग्नोर कर दिया. नहीं. सो प्रदीप ने मुझे याद किया कि आप कहाँ देख रहे हैं. मैंने कहा देखना, उधर नहीं देखा ना. So Chauhan साहब will give $500, and that's I have to say thank you.